as I said that this is the third portion of the lectures for the course of advanced studies in the sensory impairment. For the physical disability, जहां हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, चूंकि ये तीनों चीजें थोड़ा सा मिक्सअप हो जाती हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको तीन तरह के हमने डिफरेंट स्पाइनल कर्वेचर जो है वो उनको टेस्ट किया है, देखना चाह रहे थे हम, जिनमें से दो हमने वन बाय वन दो लास्ट वीक्स के अंदर इनको देख लिया है। तो हमारे लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों के अंदर डिफरेंशिएट किया जा सके ताकि हमारे पास जो है वो हम इसको बेहतर तरह से अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में हों। फर्स्ट वाज द स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस के अंदर बुनियादी तौर पर हमारे पास ये था कि जो वर्टिकली हमारे पास हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये लेफ्ट या राइट मूव हो जाती थी। जैसे आप स्कोलियोसिस के जहां पर साथ ही आप देख रहे हैं, जहां पर अगर मैं आपके साथ मेंशन करूं तो हमारे पास ये लेफ्ट राइट मूवमेंट इसके अंदर होती है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो लेफ्ट और राइट तरफ जो है वो किसी एक तरफ जो है वो मूव कर जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, डी फिगर हो जाती है, एग्जेजरेटेड हो जाती है टू द लेफ्ट वर्ड और द राइट वर्ड, जिसकी वजह से जो पोस्चर है वो डिफॉर्मेट हो जाता है, बॉडी डी फिगर हो जाती है। सेकंड वन हमारे पास ये था काइफोसिस। काइफोसिस के अंदर हमारे पास ये इश्यू होता है कि जहां पर भी हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड मूव होती है, बट ये लेफ्ट राइट नहीं होती, लेकिन इनवर्ड और आउटवर्ड होती है। इनवर्ड या फिर आउटवर्ड होती है, या तो पीछे की तरफ निकल जाती है या अंदर की तरफ धनस जाती है, जिसकी वजह से बॉडी पोस्चर जो है वो और पोस्टीरियर कर्वेचर जो है वो डी फिगर हो जाता है और इसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम आ जाती हैं। और स्पेसिफिकली अगर जब ये इनवर्ड मूव करती है, इनवर्ड मूव करने की वजह से जो लंग्स की एक्सट्रैक्शन और एक्सपेंशन कैपेसिटी है उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। कॉन्ट्रैक्शन में तो यकीनन नहीं आती, लेकिन एक्सपेंड होना, एक्सपेंशन जो है वो लंग्स की, उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ये आपके रीकैप के लिए मैंने दोबारा से इसको रखा है। जो फर्स्ट वन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल कर्वेचर, ये नॉर्मल हमारे पास है, दिस इज द राइट पोस्चर ऑफ आवर बॉडी। और जहां पर ये देखें कि हेड जो है वो फॉरवर्ड झुका हुआ है, दिस इज कॉफिसिस है। और इस तरह से जहां पर भी आप देखें इसका, यहाँ पर जो सीने के अपोजिट साइड है वो भी बाहर की तरफ निकली हुई है। और जहां पर अगर आप गौर करें, जो फोर्थ वन डायग्राम है, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि जहां से ये जो पोर्शन है ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है। आपको ये है दोनों अप एंड डाउन है यहाँ पर, लेकिन ये वाला पोर्शन अपवर्ड है और ये जो पोर्शन है इसको डाउनवर्ड है। और जहां भी ये है ये डाउनवर्ड है, जिसकी वजह से बैक जो है वो बाहर निकली हुई है। जहां पर ये फीमेल पोस्चर्स है, चूंकि जैसे हमने जी इसको बहुत जगह पर जिक्र किया है, दिस इज द राइट पोर्शन एंड राइट पोस्चर एंड नॉर्मल पोस्चर, नॉर्मल फिगर। और सिमिलरली जहां पर आप देख रहे हैं कि जे कैफोसिस के तीन डिफरेंट पोस्चर्स हैं जिनके अंदर आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है। जी, मैंने यहाँ पर आपका पिछला रीकैप था, मैंने दो बातें आपको दोबारा से दोहरा दी हैं ताकि हम आने वाले नए कॉन्सेप्ट के बारे में, लॉर्डोसिस के बारे में हम डिटेल के साथ बात कर सकें। आप ये कोशिश कीजिएगा कि इन जो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं जहाँ पर जो आपके पास आ रही हैं, इनकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। मेडिकल टर्म्स हैं आपके लिए इसको बोलने में, और
प्रोसीड करने में आपके लिए आसानी रहेगी। ओके, टुडे इज द थर्ड टाइप ऑफ द spinal curvature defiguring problem. This is lordosis. Lordosis. Basically, lordosis is a forward curvature of the spine when it is viewed from the side. जब आप साइड से इसको देखेंगे तो आपको इन साइड जो है वो इसकी जो डिफिगरिंग है वो नजर आएगी। Basically, lordosis is the medical name for exaggerated inward curve of the spine and often in the neck or lower back. और मोस्टली ज़्यादातर केसेस जो हैं वो लोअर बैक के ज़्यादातर हैं और हमारे पास टॉप के भी हैं बट ज़्यादातर जो है वो लोअर के हैं। Lordosis usually does not cause symptoms. However, if it is severe, it can cause pain and may require surgery in some cases. Basically, a person with lordosis may have an exaggerated inward curve of the lower back. Dear students, lordosis refers to an exaggerated inward curve of the spine, and some of the people call the condition sway back. Sway back. इसको एक दूसरा नाम जो दिया जाता है जब आपकी आई एम सॉरी टू से आई मीन एनी इंडिविजुअल जो कि जिसकी जो स्पाइनल कार्ड है वो बॉटम से अंदर की तरफ धंसी हुई होगी उसको कुछ लोग जो है वो लॉर्डोसिस की वजह से स्वे बैक का नाम भी दिया जाता है। बट ये जो हमारे पास स्पाइनल कर्वेचर है दैट इज मोस्टली ये जो जिन कंडीशन की वजह से जो इश्यूज पैदा होते हैं उसके अंदर स्पाइना बाइफिडा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, सेरेब्रल पाल्सी है, बट इसके साथ साथ सम टाइम ट्यूमर के रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, इन्फेक्शंस के इश्यूज भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह से भी ये मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं और बट सम टाइम मेटाबॉलिक डिसीजेज जो हैं उनकी वजह से भी इशू आ जाते हैं। तो हम जहां पर ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स हैं लॉर्डोसिस की वो हमारे पास कौन कौन सी हैं और उनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर बुनियादी तौर पर हमारे पास सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है वो है लॉर्डोसिस इन द लोअर बैक, यानी आपके अगर आप जहां पर इस डायग्राम को देख रहे हैं दिस इज द नॉर्मल कर्व, दिस इज द राउंड बैक, दिस इज द फ्लैट एंड दिस इज द, जहां पर आप जो गौर करें कि जो एंड ऑफ द पार्ट है जहां पर जो लोअर पोर्शन है बेसिकली जहां पर आपको प्रॉब्लम नजर आती है। बेसिकली लॉर्डोसिस इन द लोअर बैक हियर एट दिस पोर्शन आर लंबार्ड स्पाइन, इसको हम लंबार्ड स्पाइन का नाम भी देते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप existing in the defiguring of the spinal curvature. And the easiest way to check for this condition is to lie on your back on a flat surface. You should be able to slide your hand under your lower back with little space to spare. Someone with lordosis will have extra space between their back and surface. If they have an extreme curve, there will be a visible C-like arc when they stand. And from the side view, their abdomen and buttock will stick out. ये जो आपका पोर्शन है यहां पर अगर आप लेटते हैं तो ये आप
एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेस आपको यहाँ पर पता चलेगा जब आप नीचे हाथ रखेंगे अपनी बॉडी के, तो आपको ये वाला पोर्शन जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर आपको नजर आएगी। द सेकंड वन द टाइप इज cervical lordosis. In a healthy spine, mostly your neck should look like a very wide C-like, with the curve pointing towards the back of your neck. Cervical lordosis is when spine in the neck region does not curve it normally should. This means that there's too much of a curve. यहां पर बेसिकली आपके पास है, जहां पर आपकी जो ये वाला जो पोर्शन है आपके इनसाइड जो है वो आ जाता है, एंड द कर्व इज रनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, आल्सो कॉल्ड रिवर्स सर्विकल लॉर्डोसिस। समटाइम ये इनवर्ड हो सकती है और समवाइट आउटवर्ड भी हो सकती है। एंड द कर्व हैज मूव टू द राइट, द कर्व हैज मूव टू द लेफ्ट। ये दोनों हमारे पास जो वो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने दो तरह का लॉर्डोसिस को डिफाइन किया है, लॉर्डोसिस लोअर बैक एंड इन द नेक। बुनियादी तौर पर ये दो टाइप्स हैं, बट जो लोअर बैक का ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा है और उसमें बहुत ज्यादा इस चीज को जो है वो हमारे यहाँ कॉमनली पाई जाती है, और जो इस टाइप के पेशेंट में जो पहले वाली हमारे पास कंडीशन है वो ज्यादा होती है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास इसके सिम्टम्स क्या है, कि वो कौन सी हमारे पास सिम्टम्स हैं जिससे हम इनको इस किस्म के इशू को देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम उनसे ये जज कर सकते हैं कि कहीं जो हमारे नियर अबाउट में कोई भी एक इंडिविजुअल है, क्या वो स्पाइनल डिफॉर्मिटी का शिकार है या फिर लॉर्डोसिस का शिकार है। The defining characteristics of lordosis is an exaggerated inward curve of the spine. Simply हमने ये बात की है कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि दिस इज इनवर्ड कर्वेचर, जहां से हमारे पास लोअर बैक से, जैसे मैंने बताया कि ये वाली जो रीजन है ये ज्यादा कॉमन है लोगों के अंदर इन केस ऑफ द lordosis curvature. Depending upon the location, lordosis can cause the buttock and stomach area to stick out. A person with lordosis may find it difficult to lie flat on the floor due to the curve in their back. In many cases, lordosis alters a person's appearance but causes no symptoms. However, when the cases got severe, the severe lordosis have the following symptoms. Number 1, back or neck pain. This is the most and top frequent cause of the top frequent symptom of the lordosis. The second one, the reason is pain that radiates into the leg and feet. And the third one is tingling or numbness. ये तीन हमारे पास मेजरली सिम्टम्स हैं लॉर्डोसिस की, बट जो सबसे टॉप और फ्रीक्वेंट है वो है बैक और नेक पेन। Rarely lordosis may cause a person to lose control of their bladder or bowels or experience sudden severe leg pain or weakness. If this happens, seek medical attention
immediately. You have to meet your doctor, family doctor, physician, or whoever from whom you are mostly getting the medical advice. My dear students, now let we have to discuss about the causes and risk factors. What are the causes of the lordosis and what are the risk factors? Mostly the reason is hidden. What is the cause of the lordosis? But there are certain causes and risk factors which are mostly frequently happen with the different patients of the such like the deformity and defiguring of the body. We have a make some classification. The following things can be lead to the problem of the deformity of the spinal cord. Number one, traumatic lordosis. This is caused by an injury to the spine such as a fracture, osteoporosis, which weakens the bones, may increase the risk of these fractures. किसी भी किस्म का फ्रैक्चर हो जाना या फिर हड्डियों की कमजोरी जो है वो इस चीज का बायस बनती है. नंबर 2, congenital lordosis. This can stem from an inherited condition such as achondroplasia, which affects cartilage growth, and it can occur due to the problem with the development of the spine during childhood. बुनियादी तौर पर congenital मोस्टली ये इश्यूज होते हैं जब बोन्स जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती और कुछ कैल्शियम की कमी और इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम्स में जो है वो हो जाती. थर्ड वन हमारे पास है पोस्टर lordosis, and this is caused by uneven posture. Having overweight or weakness in the abdominal muscles can increase the risk, as both factors strain the lower back. इसकी वजह से ज़्यादा लोअर बैक की बहरहाल मुतासिर होती है जब स्टमक और दूसरी चीज़ों का इश्यूज बन जाता है. जहाँ आप बहुत ज़्यादा पेट जिन लोगों का बढ़ जाता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाता है और उन लोगों के लिए जो प्रॉब्लम होती है, या फिर कुछ और हैवी वेट ओवरऑल अगर कुछ लोग हैवी वेट हैं तो उनके लिए ये प्रॉब्लम आ जाती है. उसके बाद है न्यूरोमस्कुलर लॉर्डोसिस. Several neuromuscular conditions can cause lordosis, including muscular dystrophy and cerebral palsy. बुनियादी तौर पर जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसका तो पूरी बॉडी के साथ इशू होता है, लेकिन ज़्यादातर वो चूँकि आपके जो जॉइंट्स हैं, जो टांगों के ऊपर जॉइंट्स जिससे पूरी बॉडी बाकी जो है वो उसको बैलेंस करती है, अगर ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इशू है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी हो सकती है. एंड पोस्ट सर्जिकल लॉर्डोसिस क्या है? नेक्स्ट इसकी जो टाइप है काज है. दिस रिजल्ट्स फ्रॉम बैक सर्जरी दैट मेक द स्पाइन लेस स्टेबल सच एज लैमिनेक्टोमी और सिलेक्टिव डोर्सल अरिस्टोमी. ये डिफरेंट रीजंस हैं, लेकिन इसमें ये है कि कोई भी एक सर्जरी जो है वो जिसकी वजह से आफ्टर सर्जरी ये चीज़ें बैलेंस ना हो तो तब एक प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है. उससे नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकेंडरी लॉर्डोसिस है, एंड दिस रिजल्ट्स फ्रॉम हैविंग अनदर कंडीशन, possibility another type of the spinal curve such as kyphosis or scoliosis or a condition that affects the hip joints. And the other one is obesity. Carrying excess weight can cause the bones and muscles to lean backward to improve balance. And the next one is osteoporosis. Age and other factors can cause bones to weaken and become brittle, which may lead to curvature of the spine.
And the next and the last one is the causes and the risk factor is spondylolisthesis. This cause one vertebrae to slip forward over another, यानी दो आगे पीछे हो जाते हैं एंड मोस्टली ये भी जो है वो लॉर्डोसिस का बायस बनता है. My dear students, these are the different factors which can cause the lordosis spinal curvature and which are the reason of the deformity and disfiguring of the human body. अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास इसका जो ज़्यादातर इश्यूज हैं वो बच्चों में पाए जाते हैं और सेकेंडली जो है वो जो हमारे पास डिफरेंट वुमेन्स हैं और उनके यहाँ जो इश्यूज पाया जाता है, तो हम उनको ज़रा ये देख लेते हैं कि बच्चों के अंदर हमारे पास क्या इश्यूज होते हैं और फिर बड़ों के अंदर इसके क्या इश्यूज होते हैं ताकि उनको डिफ्रेंशिएट जो है वो किया जा सके. जी, basically lordosis appear in childhood without any known cause. As I already said that there is not known cause of the lordosis spinal curvature. If this issue happens in the children, and then this is called the benign juvenile lordosis, and it happens because the muscles around your child hips are weak or tightening up, and this kind of the lordosis which are happen in the children typically corrects itself as your children grow. बट ये बात याद रखने की है कि इस तरह से ये ग्रो तो हो जाते हैं कि बच्चों के जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वो बेहतर हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी आते हैं जिनमें बच्चे जब ग्रो हो जाते हैं तो वो फिर भी इसको ठीक नहीं हो पाते. तो मोस्टली जो मसल डिस्ट्रॉफी के साथ बच्चे होते हैं उनके साथ ये इश्यू आता है, बट अगर ये मसल डिस्ट्रॉफी के साथ आ रहा है तो फिर ये करेक्ट नहीं होता. मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपके लेक्चर्स में शेयर किया था जो मसल डिस्ट्रॉफी के पाकिस्तान की हिस्ट्री का इशू है. पाकिस्तान के अंदर मसल डिस्ट्रॉफी वाले बच्चे 14, 15, 16 साल तक जिंदा रहते हैं और उसके साथ मोस्ट ऑफ द जो चिल्ड्रन हैं वो मलेरिया की वजह से वफात पा जाते हैं. And lordosis can also be a sign of a hip dislocation, especially if your child has been hit by a car or a fallen somewhere else. There are the other 5 conditions as well for the lordosis in the children. The number 1 is cerebral palsy, and the second one is an inherited condition where the spinal cord sticks through a gap in the bones of the back. And the number 3rd is the reason muscular dystrophy, a group of inherited disorder that cause muscle weakness. And the next one is spinal muscular dystrophy, an inherited condition that causes involuntarily movement. And the last one, lordosis in the children, is the kyphosis, a problem that occurs at birth where the joint can't move as much as normal. Mostly this is happen during the birth as well. उसमें कोई भी इशू हो सकता है, मेडिकल इशू हो सकता है, बच्चों की डाइट या डिफरेंट और बहुत सारे मेडिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से मसल्स जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते और वो वीक रह जाते हैं जिसकी वजह से मसाइल आते हैं. अब हम ये देखते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है और इसके डायग्नोज के क्या तरीकेकार हैं. क्या उसके अंदर जो है वो कुछ ऐसी हेल्प मौजूद है जिससे इस चीज़ को डायग्नोज किया जा सकता हो,
और इन चीजों से बचा जा सकता हो। A doctor can usually identify lordosis with a physical examination, and they may also use an X-ray, MRI, or CT scan to confirm the diagnosis. A scan indicates the extent of the curve in the spine. If the person has symptom of an injury or a medical condition that can cause lordosis, the doctor may perform additional tests to diagnose the underlying causes. And what are those? Number one, expect in depth, science backed top lines of our uh, best examination. That maybe sometime doctors can identify the causes and diagnose with the help of the MRI and CT scan. जो मेजर उसके पास टूल हैं जिसके जरिए डॉक्टर जो आइडेंटिफाई कर सकता है कि भाई इस एक स्पेसिफिक एक ह्यूमन बीइंग को स्पेसिफिक इंडिविजुअल को ये प्रॉब्लम है या नहीं है, उसके लिए वो मोस्टली एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन, ये तीन टूल्स उसके पास होते हैं। हाँ, सम टाइम अगर वो जो मजीद डायग्नोज करना चाहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब किस लेवल तक वो है, उसके लिए उसे मजीद टेस्ट भी करवाना पड़ सकते हैं, जिसको वो करवा सकता है ताकि मजीद इसमें डायग्नोज किया। जैसे हमने ऊपर देखा कि डिफरेंट रीजंस हैं, तो उन रीजंस को पूरा करने के लिए, देखने के लिए, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए भी उसको देखा जा सकता है, एक्स्ट्रा टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे पास लॉर्डोसिस डायग्नोस हो सकता है और उसके रीजंस का पता चल सकता है। बट ज्यादातर जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मोस्ट ऑफ द रीजंस आर द हिडन और उसकी कुछ भी प्रॉपरली डायग्नोज नहीं हो पाता। लेकिन समटाइम्स जो है वो, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास प्रॉपर बोन्स डिवेल्प नहीं होती हैं, जब किसी वजह से वीक हो जाती हैं, एज फैक्टर आ जाता है, तो वो भी इश्यूज हो जाते हैं। अब हमारे पास एक ये भी है कि लॉर्डोसिस का एक यहाँ पर भी एक इशू है कि ये प्रेग्नेंट वुमेन के साथ भी इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है और उनको भी समटाइम्स ये जो है वो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है। इसके ऊपर हम ज़्यादा तो जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट एक सिंपली मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द pregnant women experience back pains and will show the signs of lordosis and a protruding belly and buttocks. But according to the Harvard cause, research shows that the lordosis during pregnancy is actually your spine adjusting to realign your center of gravity. उसकी वजह से जो है वो ऐसा होता है, चूंकि वेट मोस्टली जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। Overall back pain may be due to the altered blood flow in your body and the pain will mostly likely go away after birth. तो सिंपली बुनियादी तौर पर ऐसा इस तरह का इशू नहीं होता, बट ये कुछ वक्त के लिए बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड फेस करना पड़ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड जो है वो बेहतर हो जाते हैं और उनकी ये जो पेन की कंडीशन है ये ख़त्म हो जाती है। अब हमारे पास ये है कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं। Most of the people with lordosis doesn't require medical treatment unless it's very severe case. Treatment for the lordosis will depend upon how severe your curve is and the presence of other symptoms as well. What are the treatment options I am going to share with you? Number one, medication to reduce pain and swelling if the swelling exists. Number two is daily physical therapy to strengthening muscles and range of motion. Number third is weight loss and to help posture.
braces in children and teens, and number 4 is braces in children and teens, weight loss to help posture. Number 5 is surgery in severe cases with neurological concerns, and the next is nutritional supplements such as vitamin D. My dear students, this is all for the day. I hope you have learned a lot from this video, and I am also very hopeful the people who are learning more have more questions, and I am very hopeful you will make this, and also I will be available for the answers of your questions at the ISP portal, inshallah, on Sunday. Thank you very much, and this is all for the day. Thank you.